Good evening, friends. Welcome to the sessions, all the traders out there. So, welcome to the post market session. Let's have a look on the indices. Just give me a minute. So, I'll just wait for a minute. I guess traders are joining. I'll just put my mobile on silent. Yeah. So, welcome. So, what we had seen is we'll just do what we have been following on the Nifty. So now you all would have understood how important is a trend from the trading perspective. Yeah, hi Sharma ji. So trend, if you see, what we have been saying is that Nifty was moving sideways, एक sideways चल रहा था, और जब भी market sideways चले, the last high becomes a resistance. So it did not cross, and the pattern of the candle is bearish. So दो चीज हम लोग follow कर रहे थे on the Nifty side. Before I start, I'll just read out the disclaimer. So this is for educational and informational purpose and does not constitute financial advice. I have prepared a plan, but I will take you. देखते कैसे हमने ये मार्किंग की है. तो जो पैटर्न अभी मार्केट में चल रही है वो है ये फॉलिंग चैनल. So now more or less we are close to the low of the falling channel, but there are bases out there जहाँ पे एक डैमेज आ सकता है from the trend perspective. Yeah, hello शर्मा जी. Important average अभी आपको ध्यान में रखनी है is the 200-day moving average, which is considered as a long-term average. So I've just plotted the 200-day moving average. Market already 200-day पे आ चुका है. Let's see whether it holds, bounce, violates or whipsaws. But this base once break, see ये सब supports तो आपके रहेंगे, which is today's low was exactly the 200 DMA. नीचे जाते तो चैनल लो आता 25,198, so 25,200. If you go shade lower, we have this gap. So a market which is in a downswing drifting down should come and fill this gap. Let's see, till that point of time we will be on the markets on the negative side. Pullbacks आते रहेंगे. Markets crashed on this day. And again, we had a 2 days pullback. So pullback is part and parcel of the swings which you see, but you have to see the broader structure. The broader structure is that there is a pressure on the market to fill the gap. Somehow today, the 200 DMA gave a support since it was way down based on previous day's close. एक support मिला market को 200 day पे यहाँ पे, and it showed, I think, 100 point का एक pullback दिया. So once 200 DMA is gone, remember that ये base violate हो जा रहा है. Base violate का मतलब है whenever there are base, there are lots of stop losses which are lying at or around the base, that does get triggered. So यहाँ पे market is like a cliffhanger as far as ये support base is concerned. So on the downside, filling of the gaps is the possibility which is opened. Just wait till the 200-day breached, because if you wait, then the moves are very fast intraday. जो पहले 2-3 दिन में मूवमेंट आता था 300 पॉइंट का, आज की तारीख में इंट्राडे में खत्म हो जा रहा है. सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ विच कौन सा मेरा लेवल्स है. जो अगर नीचे टूटा तो एक डिप आएगा और ऊपर टूटा तो एक स्पाइक आएगा. सो मॉर्निंग में भी हमने देखा था, वंस दिस लो इज गॉन, कल का जो कैंडल था वो स्पिनिंग टॉप था. स्पिनिंग टॉप का मतलब है अगर हाई निकलता तो एक तेजी हो सकती थी, लो निकल गया तो एक मंदी हो सकती थी. आज लो ब्रेक हो गया. हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दैट? गिव मी अ यस और अ नो. एंड नाउ रेजिस्टेंस लास्ट हाई का ही रखेंगे, बीच में नहीं लेंगे. ओके, सो लास्ट हाई रेजिस्टेंस इज नाउ फ्रॉम हियर वी शिफ्टेड टू हियर, and from now we shifted to here. So now this is going to be the resistance for the markets. इससे ज्यादा रेजिस्टेंस हम अभी नहीं लेंगे लास्ट स्विंग हाई पे. डेटी ट्रेडर कल का लो टूटने पे देखा कैसा मार्केट गया. दैट्स द स्पिनिंग टॉप. So individual candles पे आप ध्यान दो. That's what we call price action. Candlestick is part of price action. So this swing high is going to be a resistance, and support levels is very fragile at 25.3. Once it breaks, see,
see a dip, whether in a day or two, or a swing basis, or a short term towards this gap. So the channel is intact. Within the channel, swing high will be your focus point for your resistance for any bounce or a pullback. Looks we are drifting down, heading down, declining down, and to fill the gap. आज 200 DMA hold किया, give it one more day, whether it's giving a pullback or straight, we are going to fill the gap. So that was Nifty. And let's go to our plan, which is for tomorrow. So I've written today's date. So the trend in Nifty now, it can be clearly changed to down, and the chart patterns जो हम लोग अभी follow कर रहे हैं, आप वो channel का chart pattern follow करो. That's great, Nanavati sir. And support is around 25,600. Resistance is around 300. I have just written it wrongly. So resistance will be 25.6, support will be 25.3. So make sure you read it, correct it in your plan. Technical study, वापस से बोलिंगर बैंड पे आ जाते हैं, because price ने अगर middle band तोड़ा, there is also 200 DMA. Now let me remove all what we have done earlier. The purpose of earlier study is done. So now I'll go back to the Bollinger Bands, and the Bollinger Band says that. So let it plot the band. So now Bollinger Band, after a long time, consistently we have closed below the middle band. So band be a gap के आसपास ही आ रहा है. So this market which is reacting from overbought, एक बार support लिया middle band पे, but the patterns which we are sharing is neither bullish but it pushing a downward pressure. So Bollinger Band on the downside should be a possibility in the short to near term. So let this market get oversold. बहुत whipsaw किया market ने 20 DMA पे, but it can still continue. But आप एक चीज ध्यान रखो, in all the whipsaw, it has not breached the last swing high. तो जब तक ये high नहीं निकल रहा, we can't be bullish on the market as a short-term traders. After that, let's go to our options data on the Nifty side. Nifty में the options data on the OI statistics part. मार्च की नेक्स्ट वीक एक्सपायरी लेते हैं. ऑन द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी अगर आप देखो तो अभी से कॉल में 25,500 स्ट्राइक प्राइस कॉल, द ओआई विच इज देयर इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट इज 70.66 lakhs इन द डे ऑफ द सेकेंड वीक एक्सपायरी. सो आप 25,500 का रेजिस्टेंस मान के चलते हैं, ये निकलेगा, फिर विल सी द ओआई डिस्ट्रीब्यूशन. बट एज ऑफ टुडे वी विल कंटिन्यू विद 25,500 स्ट्राइक प्राइस कॉल ओआई बिल्डअप. पुट साइड में इज वे डाउन 25. तो आप अगर यहाँ पे भी टावर देखो तो कॉल में 8.54 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है फॉर द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी. पुट में कॉल में 8.54 करोड़ and in put it is 5.14 crores. So market is heavily on the call side of it. You can see the towers. Call में there are big towers who I build up. And the same way, if you can come to put, you yourself can see visually market एक हल्का put की side में. So call writers are very active, और there are small over here. हर 100 point पे तो आएगा ही OI build up, but we see the big one, the towers one for next week. It is 25,000. Till this is not changing, we will follow this. So that's how the plan for the Nifty is. And yeah, 25,500 का कॉल में ओआई बिल्डअप है, 25,000 पे पुट पे बिल्डअप है. और क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो हम पीसीआर भी देखते हैं 0.60. सो मार्केट इज इन द साइड ऑफ द बिलोंग्स टू द कॉल राइट. एंड स्ट्रैडल प्राइस फॉर नेक्स्ट वीक इज 363. तो मूवमेंट तो रह गई मार्केट में. द स्ट्रैडल प्राइस आल्सो सजेस्टिंग, एंड द कमेंट्री इज वी आर इन अ डाउन स्विंग. नाउ आज का जो डिक्लाइन था, आई थिंक आईटी इंडेक्स सपोर्टेड द मार्केट्स ऑन इट्स वे डाउन. मतलब that was one of the worst performing index today. Morning I had checked, but bank nifty abhi bhi hold kar raha hai. So bank nifty is still holding out. So let's now go and do the bank nifty analysis. But bank nifty is holding out, but it is now about to give either a trend continuation or a trend change. But हमने एक seller zone identify किया था. If everybody remember, in the morning also we did decide earlier Trump tariff news पे the open and the high. This is to me the seller zone.
आज भी जब मार्केट खुला, how many of you observed it just touched the seller's zone and from there it cooled off? गॉट इट एवरीबॉडी? तो यहाँ पे एटलीस्ट इतना पता है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये क्रॉस भी नहीं कर रहा, नीचे भी नहीं आ रहा, बट नाउ आपको एक ध्यान रखना, इट इज नाउ एट अ वेरी वेरी डिसिसिव लेवल. व्हाई वी से डिसिसिव लेवल? बिकॉज ये जो साइडवेज हो रखा मार्केट, फ्रॉम हियर साइडवेज इट कैन ट्रेंड द चेंज. So first, generally what I do, I remove my earliest studies if I'm doing something fresh. So I know 61,004 और 7 के बीच में एक बहुत strong selling zone है. अभी बैंक निफ्टी देखते हैं विथ रिलेशन टू दिस हाई. एक ये लो बना आपका और ये हाई बना, ये एक लोअर हाई है. नाइदर लो टूटा ना हाई टूटा. बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्रॉम द डेली पॉइंट ऑफ व्यू चार्ट्स इज अबाउट टू गिव, अगर ये हाई टूट जाता तो इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑन द अपसाइड, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेंड चालू हुआ था वो कंटिन्यू करेगा. बट इफ इट ब्रेक्स दिस ऑन द डाउन साइड, इट विल मेक अ लोअर हाई which will be negative for the bank nifty in the short term. just bank nifty पे आप ध्यान दो, तो sideways compression बैंक निफ्टी में काफी strong हो रखा है, और यहाँ से अगर हाई टूट गया तो कंटिन्यूएशन रहेगा, विल गो बैक टू 61.7 और अनदर 100 पॉइंट्स, एक जो ऊपर का बोलिंगर बैंड है विच इज द रेजिस्टेंस. और लो के पास आके इफ यू आर ब्रेकिंग द लास्ट लो, देन लोअर हाइज बन जा रहा है, then we are having a sequence of lower highs and a lower low. So bank nifty में भी एक pressure आएगा. As of today, bank nifty is sideways, but keep in mind from here sideways can resolve in favor of the bulls upside or on the downside. Even if it breaks up, ये जो रेजिस्टेंस है काफी स्ट्रांग है. आप ये चीज का ध्यान रखो बैंक निफ्टी में. अभी तक बैंक निफ्टी इज सपोर्टिंग द मार्केट इन सेंस दैट बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन द निफ्टी. सो दैट वाज बैंक निफ्टी. एंड अगर हम बैंक निफ्टी का ओआई डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट मंथ के लिए देखते हैं, विच इज फॉर मार्च, सो दैट्स बैंक निफ्टी. Have you all got into the habit of following OI? Yes or no? Day trader, have you started doing it? Okay. So अगर हम देखिए 61,000 जहां पे आज का क्लोजिंग है, वहां पे एटीएम स्ट्राइक पे मैक्सिमम OI बिल्डअप है. प्रॉब्ली दिस बिलोंग टू द स्ट्रैडल शॉर्ट्स और स्ट्रैडल ट्रेडर्स. इसके अलावा देयर इज अ 61.5 और फिर 65, 500 पॉइंट ऊपर नीचे. तो जब ओआई बिल्डअप 500 पॉइंट नीचे होता ऊपर और कॉल में ऊपर होता, इट क्लियरली सेज ट्रेडर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ 500 पॉइंट स्विंग ऑन द अपसाइड or a 500 point swing on the downside. So volatility will be the order of the day. But आप वो trend, just keep a watch on the trend on the Nifty. Is sideways can resolve in favor of either buyers or sellers. And chart pattern is a range, sideways range में चल रहा है, resistance 61.5 और एक रेंज लेके चलो आप 61.5 to 61.7. आज भी वहां पे गया था. From there only it saw some selling pressure. Support is at 60,550 odd levels, which is the last low. टेक्निकल स्टडी यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास ही सेलर जोन पे बार बार हिट कर रहा. नाइदर इज ब्रेकिंग ऑन द अपसाइड नॉर इज ब्रेकिंग ऑन द डाउनसाइड. सो द बुल्स एंड बेयर्स आर इक्वली एट और अराउंड द करंट लेवल. लेट्स सी हु इज द विनर आउट देयर. ओपन इंटरेस्ट में 61.5 का कॉल पे हुआ है और पुट में 60,000 पे. सो फ्रॉम द करंट प्राइस 500 पॉइंट्स अबव एंड बिलो द ओआई डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द कॉल एंड पुट इज. क्यूमुलेटिव पीसीआर बैंक निफ्टी का 1.25 है. सो बैंक निफ्टी से एक अलग ही पिक्चर दिखा रहा है. लेट्स गो एंड चेक. अगर बैंक निफ्टी में हम देखें तो पुट में ओआई नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी में 78.05 लाख है और कॉल में 65.15 लाख है. Which means if put is open interest is high, let it break some relevant support for us to say that it can dip down. Or let's trade with the context of the last high and the low. So the put side, OI buildup does right now suggest that there is a decent support out there. But it's a start of the expiry. So let it go, let time pass by and then we'll able to have a fairly decent judgment. अभी से आप 60,050 का सपोर्ट लेके चलो, विच इज ऑल्सो मैचिंग विद द प्राइस एक्शन विच इज द लास्ट लो. आर यू सीइंग दिस? सो लास्ट लो का ही ओआई डिस्ट्रीब्यूशन है पुट में और कॉल में अराउंड लास्ट ये हाई का 61.5.
So right now it is showing both highs and low pay. The OI buildup is in the calls and the puts. And let me come back to a plan. Straddle price for Nifty is 1775, which is a decent one. So the volatility will be there in a month if straddle price is 70.75 from the today's expiry. At least we should expect some good volatility spikes up or down during the month on bank nifty. A commentary nifty bank nifty may can't call it a downswing because bank nifty ने अभी भी higher low maintain किया और lower high maintain किया, which means it's a corrective sideways. Let's see in which side it resolve in favor of. So bank nifty पे आप ध्यान दो. And if there's a trend change in bank nifty, it would be further bad for the markets. Now, देखते हैं gold का वो symmetrical triangle, has it given us a breakout or not? Anybody trading gold or any commodities? Gold हम MCX में देखते हैं, gold futures on MCX. Daily trader says yes. या दिस इज गोल्ड एंड हम बार बार एक ही चीज बोल रहे थे, गोल्ड जब तक ये गैप नहीं है इट इज हेडिंग हायर. ये रेजिस्टेंस लेवल पे गोल्ड रुका था. येस्टरडे आल्सो देयर वाज अ स्ट्रांग मूव इन गोल्ड. सो गोल्ड ट्रायंगल से एक बार निकला है, which means keep this as a support for your short term trading in gold. And एक बार ट्रायंगल से निकल जाता है ना, then what happens, it takes shape of a channel, which means you take this low, you take this high and connect it. Triangle breakouts give you a channel formation. Always remember that, right? So gold, the move is channelized. कल के gap पे support है and the upside over here is somewhere around let me check, somewhere around 1,65,924, मतलब 1,66,000 का upside. Sorry, mouse cursor is not getting stable, I don't know why. Yeah, it's 1,64,500 to 65,000. वहां तक का एक गोल्ड का मूव है with this as a support. A triangle breakout has taken a shape of an upward sloping channel. So that's how the gold is. So back to our markets. Let me open both the charts. We'll again meet tomorrow. And so, okay, you want all the three charts together? I'll do it. So first, what we analyzed was Nifty. निफ्टी में आप बेस पे ध्यान दो, the 200 DMA. So I'll go to Nifty. Yeah, you want all the charts together? I'll keep it in one screen. So the first one is Nifty, the second one is Bank Nifty, and the third one I'll change it to gold. Yes. So that's how the three charts are, and mark the channels on gold. So yeah, so it's there. Sorry. So those are, I have aligned the three charts based on what we have discussed today. Nifty, this where the 200 DMA ध्यान रखो. Bank Nifty में is still sideways. Wait for a break either on the up or down. Even if there's upside breakout, the overhead resistance or the selling pressure is too strong, around 61.5 to 61.7, and gold is moving in a channel. So before I end the session, let me read out the disclaimer. Just give me a minute. Today I think my mousepad is giving me some trouble. Yeah, it's there. So the session is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. So friends, again, we are going to meet tomorrow at 8:45 for pre-market session. Thanks and have a nice day, everybody.